Hello students. Last lecture we did few examples of complex numbers. PYQs ही कर रहे थे हम. तो I'll just quickly take you through that. Okay. So last lecture PYQs करते वक्त पहला PYQ किया था जहाँ पे ABCD ढूंढना था and इसी कैटेगरी में ABCDE ढूंढना था. You can find it in the playlist, okay, which is available. And then we found the analytic function given the real part. We also did the question where U plus IV was given. And we did one more question. Yeah. Where U plus V was given to you. Okay. And last lecture, I told you that we'll do this particular question later. The question is V, the given it. We have to prove V is harmonic and find the corresponding analytic function. So f of z ढूंढना है, V given है आपके पास. Okay. पहला मतलब there are two parts here. First part V harmonic prove करना है. Second part is corresponding analytic function ढूंढना है. So first and foremost, analytic proof, harmonic proof करना मतलब क्या prove करना है आपको? So you have to prove that it satisfies the Laplace equation. Okay, you have to prove it satisfies the Laplace equation. What is the Laplace equation? So the Laplace equation for a harmonic function in the Cartesian form is Vxx plus Vyy equal to 0. What do you mean by this? You take double derivative of V with respect to x, add it to the double derivative of V with respect to y, answer should be 0. So let's begin with the sum without wasting any more time. So V is given to us. Let's start the first derivative with respect to x. Again repeating x से अगर जब derivative ले रहे हो, partial derivative, okay? You're not taking complete derivative, you're taking partial. x को छोड़ के बाकी सब constant treat करोगे और constant अगर अकेला है उसमें y x का term नहीं है तो उसका derivative 0 हो जाएगा, okay? And if you're taking with respect to y, same process, treating y as variable. So in this case, 3y will be constant, x square का derivative 2x, 6y is a constant, x का derivative 1 and last term is alone constant, so 0. So simplify करेंगे तो 6xy plus 6y. Laplace equation के लिए हमारे पास pxx होना चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव लेंगे, मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे. Again 6y constant, x का डेरिवेटिव 1, 6y का डेरिवेटिव 0 because वहां पे x का टर्म नहीं है. My answer now is 6y. My answer now is 6y. That's my xx. Let's move to vyy now. So before moving to vyy, I'll require vy. So let's start with vy. So I have x square. Okay. So we have vy would be 3x square constant, y का derivative 1, 6x constant, y derivative 1, y cube derivative will be 3y square. I'll remind you, we'll treat y as variable, बाकी सब constant, okay? Again, vyy meaning आप vy का derivative लोगे वापस y से. So first term में y का term नहीं है तो उसका derivative 0, second term में भी y का term नहीं है तो उसका derivative भी 0 आएगा. Last term में negative 3 constant हो जाएगा, y square का derivative 2y. So now my answer is minus 6y. Okay? So now let's check what is the value of vxx plus vyy. So vxx plus vyy is 6y plus negative 6y, which is going to be 0. So this implies, I'll write it down here and I'll erase this. This implies V satisfies Laplace equation and which implies V is harmonic. Which implies V is harmonic. क्वेश्चन में पूछा गया था V is harmonic प्रूव करने के लिए, हमने ये प्रूव कर दिया है. Okay, so first half of the question is completed. अब second half पे जाते हैं. Find the corresponding analytic function, मतलब f of z ढूंढना है. f of z ढूंढने के लिए अभी हमारे पास we have this formula f dash of z
is ux plus ivx. We don't have the value of u, so we will be using Cauchy-Riemann equations. So by Cauchy-Riemann equations, I can write ux is v1, and therefore f dash would be vy plus ivx. Okay, so let's substitute the values and then integrate using Milne-Thomson, which we did before as well. So let's write down the value. F dash of z, as per the formula, is vy plus ivx. So vy over here is this term, this entire thing. Okay, so I'm going to take it there. 3x square plus 6x minus 3y square. ये आपका vy है, करेक्ट. एंड प्लस ivx, तो ivx के लिए ये वाला टर्म उठाएंगे 6xy and 6y with I. So दोनों टर्म के लिए I will come in. Okay, so yes, we have carried forward all of these. F of z would be integral of f dash of z, and by Milne-Thomson method, we replace x with z and y with 0. So we get f of z is now equal to integral of, all your x will be replaced in f dash with z, so 3z square, 6z, 3y square वाला टर्म 0 हो जाएगा, बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये दो ही टर्म्स बचने वाले, dz. So 3z square का इंटीग्रल 3z square का इंटीग्रल z cube by 3, 6 times z का इंटीग्रल z square by 2, and constant of integration c आ जाएगा. 3 gets cancelled. I'm left with z cube plus 3z square plus c. Okay, so that's your required analytic function. This is your required analytic function. So let's understand. There were two things asked in the question. First part tha V is harmonic prove karo. Second part tha analytic function dhondo. So we did that. We did both. First half we proved V is harmonic here, and second half we found the analytic function. Okay, so this was again a 5 marks question asked in the exam. Now we look at the next category of questions. The question says, prove f of z is analytic. Also find its derivative. Also find its derivative. Okay, the process is going to remain the same, but let's observe and understand. Question में u and v अलग-अलग नहीं दिया है. Real part, analytic, real part and imaginary part अलग करके नहीं दिया है. So first step is going to be, आपको उसको separate करना पड़ेगा. So e raised to 2z से start हुआ है question. Z will be written as x plus iy. Let's open the bracket. E raised to 2x into e raised to 2iy. Okay, I am using the formula a raised to m plus n is a raised to m into a raised to n. जनरली हमने इसको उल्टा यूज किया, मतलब a raised to m into n is equal to a raised to m plus n के फॉर्म में यूज किया इसको हमेशा. इस बार हमने इसको रिवर्स यूज किया. ओके, सो इसको एक्सपांड करेंगे आई वाई वाले टर्म को. Here you will get cos 2y plus I sin 2y. यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज किया है, आपके पास ये फॉर्मूला है e raised to I थीटा, थीटा कुछ भी होने दो. ओके, एंगल, इसको आप लिखते हो cos थीटा प्लस I sin थीटा. तो यहाँ पे I के साथ जो था वो थीटा था आपका, मतलब I के साथ 2y था ना, वो आपका cos 2y एंड sin 2y में कन्वर्ट हो गया. अब वापस ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. e raised to 2x cos 2y and I times e raised to 2x sin 2y.
नाउ ऑब्जर्व, आपके पास दो टर्म्स हो गए हैं. दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे u प्लस आई वी, which implies u मतलब real part is e raised to 2x cos 2y, and v, which is the imaginary part, is e raised to 2x sin 2y. क्वेश्चन में बोला है प्रूव करो ये फंक्शन एनालिटिक है. एनालिटिक फंक्शन के दो कंडीशंस होते हैं. कंडीशन नंबर 1, इट सैटिस्फाइज CR इक्वेशंस. कंडीशन नंबर 2, जितने पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे ux, uy, vx एंड vy, ये सारे कंटिन्यूस होने चाहिए. Okay, so there are two conditions. So let's look at one at a time. So let's start with ux here itself. ux के लिए cos 2y कांस्टेंट होगा. e raised to x का e raised to x ही होता है, बट x की जगह 2x था तो चेन रूल से यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, एंड cos 2y एज इट इज बचेगा. vx भी कैलकुलेट कर लेते हैं. sin 2y को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2 e raised to 2x चेन रूल अप्लाई किया है अगेन, एंड sin 2y एज इट इज. uy e raised to 2x कांस्टेंट हो जाएगा. cos 2y का डेरिवेटिव नेगेटिव sin 2y, अगेन चेन रूल बिकॉज 2y है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो इफ आई सिंप्लीफाई आई गेट नेगेटिव 2 e raised to 2x sin 2y. vy कैलकुलेट करेंगे. vy के लिए v को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. सो e raised to 2x कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos होता है एंड 2y का डेरिवेटिव 2 होता है. ओके, सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व, वी शुड हैव ux, कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, कंडीशन नंबर 1. तो ux should be equal to vy. So is your ux equal to vy? Yes, ux is equal to vy, and your vx should be equal to negative uy. You can see they are equal. So this implies u comma v satisfy Cauchy-Riemann equations. Okay, they are satisfying Cauchy-Riemann equations. Also, let's observe each of these derivatives have exponential sin and cos. ये सारे के सारे function जो है वो खुद continuous है. Okay, so I'll directly write ux, uy, vx and vy are continuous. Discontinuity कब आती है? जब denominator 0 हो रहा है या ऐसा कुछ है तो you will check for discontinuity. All of these like polynomial function है, exponential function है, cosine है, sine है, ये सारे के सारे हमेशा continuous होते हैं. Okay, so these are continuous. So this implies f of z is analytic. Analytic के दोनों conditions satisfy हो चुके हैं. Cauchy-Riemann equation satisfy हो चुका है, and ux, uy, vx, vy सारे के सारे continuous है. तो f of z becomes analytic. Question is not getting over there. Question ने first part में पूछा है prove that the function is analytic. Also find its derivative बोला है. Also find its derivative बोला है. So let's calculate the derivative. If you remember, we have been using this formula. F dash of z is ux plus idx. Okay. So यहाँ पे values डाल देंगे ux and vx की. यहाँ पे हमारे पास दोनों present है. So ux is 2 e raised to 2x cos 2y. I times vx is 2 e raised to 2x sin 2y. Okay, let's understand. The question is asking us f dash. Okay, f dash का जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन अगर z के फॉर्म में है, if you observe the question is given in the form of e raised to 2z, your answer should also be in the form of z. You cannot leave your answer in the form of x and y. f dash मिल गया है हमको, बट आंसर हम x and y के फॉर्म में नहीं रख सकते. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके z के फॉर्म में लेके आएंगे. So how do you simplify? 2 e raised to 2x कॉमन ले लो. Cos 2y
plus I sin 2y. Okay. Now going reverse. Previously, if you observe here, ये फॉर्मूला यूज किया था e raised to I थीटा को एक्सपांड करने के लिए. अब हम ऐसे जाएंगे उल्टा, cos थीटा से cos थीटा प्लस I sin थीटा से e raised to I थीटा पे जाएंगे. सो यहाँ पे अगर लास्ट स्टेप में ब्रैकेट देखोगे तो cos 2 थीटा मतलब 2y जो थीटा है एंड I sin 2 थीटा 2y है. So I'll write this as 2 e raised to 2x as it is. E raised to 2iy लिख सकते हैं इसको, करेक्ट नो? आपका जो फॉर्मूला था वो मैं उल्टा लिखती हूँ. e raised to I थीटा is cos theta plus I sin theta. एंड यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह 2 पाई है. Okay, if you observe here, your theta is 2y. Okay, so I have replaced it. What's the point in replacing? क्या हो जाएगा अभी ये 2 times base is same, powers add हो जाएंगे and numerator sorry the power में 2 कॉमन लेके x plus iy बचेगा. X plus iy is nothing but z. So the derivative is 2 e raised to 2z. Okay, so that is what the question was asking us. First part of the question was prove it is analytic. Second part of the question was find the derivative. So yes, we have found the derivative. Again, I repeat, if the question is in the form of z, the answer should also be in the form of z itself. Okay. Moving further to the next question. Similar question. F of z is given. This time, real part, imaginary part separate करके दे दिया है. Question में आपको find its derivative पूछा है. Question x और y के फॉर्म में है. अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो हम आंसर भी x एंड y के फॉर्म में लिखेंगे. सिंप्लीफाई हुआ तो हम z के फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. f of z दे दिया है 1/2 log of x square plus y square I tan inverse y by x. यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे विद u plus iv. So my real part, that is u, will be 1/2 times log of x square plus y square. V, which is the imaginary part, is tan inverse of y by x. Okay. क्वेश्चन में बोला है इसको एनालिटिक प्रूफ करना है. कार्टेशियन फॉर्म में एनालिटिक के लिए कॉशी रीमन एंड कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा. कॉशी रीमन के लिए ux, uy, vx एंड vy. सो हाफ इज अ कांस्टेंट. लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x एंड जिसको x अज्यूम किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 गेट्स कैंसिल्ड. x upon x square plus y square. This is your ux. This is your ux. Coming to vx, tan inverse का डेरिवेटिव होता है another formula here. वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है. ओके, सो लेट्स यूज इट. tan inverse of y by x 1/1 plus y square by x square एंड जिसको x अज्यूम किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. y कांस्टेंट आ जाएगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो एक्स स्क्वायर होगा वो ऊपर लेके आएंगे. एक वाई ऑलरेडी ऊपर है, नेगेटिव साइन है एंड एक एक्स स्क्वायर नीचे भी है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो मेरे पास अभी बचा है नेगेटिव वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज यू एक्स. वी नीड टू स्टिल कैलकुलेट यू वाई एंड वी वाई. यू वाई के लिए अगेन लॉग वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे with respect to y this time. So 1/2 again constant. log का डेरिवेटिव वापस x square plus y square. चेन रूल लगाते वक्त 2y आएगा इस बार. y का टर्म का डेरिवेटिव आएगा, x के टर्म का 0 हो जाएगा. 2 गेट्स कैंसिल्ड. आपके पास बचेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, dy के लिए tan inverse का डेरिवेटिव बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू y. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम.
tan इनवर्स का डेरिवेटिव अगेन 1/1 प्लस x की जगह भी जो भी था उसका स्क्वायर एंड चेन रूल. इस बार 1/x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 है. सो अगेन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक और एक्स स्क्वायर आएगा जो ऊपर चला जाएगा और ऊपर एक और एक्स है नीचे. So this gets cancelled. So I'm left with x upon x square plus y square. Okay. Compare करके देखते हैं. Have I got ux, which is x upon x square plus y square equal to vy? Yes. Ux is equal to vy. Uy, which is y upon this, it's also equal to negative upon this. Okay. So uy is equal to negative vx. So this implies Cauchy-Riemann equations are satisfied. Hello students. Last lecture we okay. In this case, the Cauchy-Riemann equations are satisfied, which implies f of z is analytic. Okay. So this implies f of z is analytic. That was the first part of the question. Prove that f of z is analytic. Okay. Sorry, this is not the only thing for analytic. Let's not forget, for analytic, you will also require the points ux, vy, uy, and vx to be continuous. Now observe these values ux, vy, and all of them. They are polynomials. Polynomials generally continuous होते हैं, provided denominator zero नहीं होना चाहिए. अब ये जो terms है सब में x square plus y square है, ये zero कब होगा? जब x और y दोनों साथ में zero होंगे. ठीक है? So यहाँ पे we'll write ux, uy, vx, vy are continuous for all x comma y not equal to 0 comma 0. And then f of z is analytic, leaving the 0 points. Okay, so f of z is analytic provided it satisfies two conditions, Cauchy-Riemann and continuity. Okay, so yeah, now the question is also asked us to find the derivative. F dash of z ka formula ux plus ivx. Let's calculate. So यहाँ पे ux was x upon x square plus y square and I times bx is negative y upon x square plus y square. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर साथ में आ जाएंगे. Now just for your information, if z is x plus iy, z bar जो उसका कॉन्जुगेट होता है वो x minus iy हो जाता है and mod z is the modulus becomes उसका स्क्वायर हो जाएगा x square plus y square. So यहाँ पे न्यूमरेटर को we'll replace by z bar and denominator will be mod z. Okay, this is my required derivative. And of course, this derivative will be possible only when denominator is non-zero. तो non-zero होने के लिए हमने देखा है कि 0,0 नहीं होना चाहिए. Okay, so this is, I believe, the second category of questions. Okay, we have one more of this category asked in May 2022. This have given us homework. I believe that question also you should try as a homework. Sine hyperbolic z question. Or let me give you a start at least. I'll give you the start and you'll complete it on your own. Okay. The start which is required is sine hyperbolic z. We will write it as sine hyperbolic x plus iy.
यहाँ पे हम लगाएंगे साइन हाइपरबोलिक a प्लस b का फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज साइन हाइपरबोलिक a cos hyperbolic b cos hyperbolic a sin hyperbolic b. सो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x cos hyperbolic iy cos hyperbolic x sin hyperbolic iy. अब यहाँ पे ध्यान दो, आई वाई जो है वो एंगल में है, एंगल में नहीं अलाउड है. कॉस का जो आई होता है वो एंगल से गायब हो जाएगा, मीन्स इट विल वैनिश, वी डोंट हैव टू डू मच. एंड हाइपरबोलिक विल गेट कन्वर्टेड टू सर्कुलर, मतलब कॉस वाई हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. साइन का आई बाहर आ जाता है एंड द हाइपरबोलिक गेट्स कन्वर्टेड टू सर्कुलर. सो आई कम्स आउट एंड साइन वाई टू बिकम. नाउ ऑब्जर्व, आपके पास एक पार्ट रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं है, दूसरा पार्ट है जिसमें आई मल्टीप्लाइड है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट. So if I compare it with u plus iv, I will get u is sine hyperbolic x cos y and v is cos hyperbolic x sin y. पार्शियल डेरिवेटिव अगर लेना है तो ux होगा साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव. साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हो जाता है cos हाइपरबोलिक एंड cos y कांस्टेंट एज इट इज. bx होगा इसका डेरिवेटिव. cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन ही होता है, देयर इज नो नेगेटिव साइन देयर. sin y constant as it is. uy होगा sin hyperbolic x constant and cos y का derivative which is negative sin y. vy हो जाएगा cos hyperbolic x constant sin का derivative cos y. Now observe, I can claim ux is vy and vx is negative uy. So I can now say that the Cauchy-Riemann equations are satisfied. And if the Cauchy-Riemann equations are satisfied, also we need to check ux, uy, vx, vy if they are continuous or no. So let's check their continuity. ये सारे cos hyperbolic, cos and all those terms है. So ये सारे के सारे continuous होंगे. Okay, all of these are continuous functions. So this implies f of z is analytic. F of z is analytic. So first part of the question is completed where we prove that f of z is analytic. Second part of the question, they are asking you to find the value of f dash. They are asking you to find the value of f dash. So again, f dash का formula लगा देंगे. ux plus ivx. Value substitute करते हैं. ux की जगह cos hyperbolic x sin cos y. I times vx की जगह पे sin hyperbolic x sin y. इसको रिवर्स ऑर्डर में सिंप्लीफाई करना है. अगेन लेट्स मी रिमाइंड यू, क्वेश्चन अगर z के फॉर्म में है, आंसर भी आपका z के फॉर्म में ही आएगा. ओके, सो x एंड y को हटाना है, आपको z के फॉर्म में जाना है. मिलने थॉमसन नहीं लगा सकते, मिलने थॉमसन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल करते वक्त लगाते हो जब f डैश से आप f ढूंढते हो. सो यहाँ पे कैसे करेंगे हम? आई राइट दिस एज cos hyperbolic x cos hyperbolic iy, रिवर्स प्रोसेस. फर्स्ट वन cos hyperbolic x, सेकेंड वन हो जाएगा sin hyperbolic iy. I को अंदर डाल दिया. ओके, सो नाउ दिस becomes, this is now the formula of cos hyperbolic a plus b. cos hyperbolic a plus b का फॉर्मूला है cos hyperbolic a
cos hyperbolic b plus sin hyperbolic a sin hyperbolic b. So यहाँ पे हो जाएगा cos hyperbolic x plus iy, and x plus iy is nothing but z. So your derivative of sin hyperbolic z is cos hyperbolic z. Okay, this is how we combined it together. And I did say it is a homework, but then I have done it for you because there were little simplifications. Okay, this question I had given as a homework. Hope there were no difficulties. Okay, I believe now this is the last category of question, orthogonal trajectories. Okay, so we'll take this as the last question, orthogonal trajectories. Fine. Find the orthogonal trajectories of the family of curves which is given to you. So ये जो family of curves आपको दिया है उसको आप U assume करते हो. That's how you do it. And orthogonal trajectory ढूंढना है मतलब आपको V ढूंढना है. Equal to C नहीं लोगे आप. Okay, यहाँ पे equal to C नहीं लोगे. आपको V ढूंढना है. तो you will start with UX again. 3y constant, x square का derivative 2x. 2 constant, x square का derivative 2x. y क्यूब का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर वाला डेरिवेटिव अगेन 0, x का टर्म नहीं है वहां पे इसलिए. ओके, 6xy प्लस 4x, ये आपका ux हो गया. uy ढूंढेंगे. 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, 2x स्क्वायर वाले टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y क्यूब वाले टर्म का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर एंड माइनस 4y. सो आपके पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y. ओके, ux uy मिल चुका है. f dash z का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ux plus ivx, but for orthogonal trajectory we don't have v here, we just have u. So ये जो vx होगा it will be replaced by negative iuy. Okay, Cauchy riemann, we'll replace it by negative iuy. So replace करने के बाद let's put the values here. 6xy plus 4x minus I times 3x square minus I times 3y square minus I times 4y. I सबके लिए है. क्वेश्चन में हमको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ढूंढना है, मतलब v ढूंढना है, तो उसके पहले फंक्शन ढूंढना पड़ेगा f of z, मतलब इंटीग्रेट करना है, यानी आपको मिलने थॉमसन अप्लाई करना है. सो f of z is integral of f dash by मिलने थॉमसन you will replace z, x की जगह z डालोगे, x की जगह z की जगह x एंड y की जगह 0 एंड देन इंटीग्रेट. तो आपका f of z होने वाला है इस बार, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा y वाला, सेकेंड टर्म हो जाएगा 4z, थर्ड टर्म हो जाएगा नेगेटिव आई 3z स्क्वायर, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म दोनों 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ y बीइंग देयर, एंड इसका इंटीग्रल लेना है dz. 4z का इंटीग्रल होगा z स्क्वायर बाई 2, 4 एज इट इज, माइनस 3i एज इट इज, z स्क्वायर का इंटीग्रल z क्यूब बाई 3. यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में. 3 गेट्स कैंसिल्ड, आपके पास बचा 2z स्क्वायर माइनस iz क्यूब. ओके, नाउ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ढूंढना है, मतलब आपको इसको वापस x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है. आपको v जो ढूंढना है वो x और y के फॉर्म में लिखना है. ओके, सो यू विल हैव टू राइट दिस एज x प्लस आई वाई दी होल स्क्वायर, x प्लस आई वाई दी होल क्यूब. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x into iy and you will have I square y square this is your expansion of a plus b the whole square. Now the second term I'll apply a plus b the whole cube. So a cube plus b cube and 3 times a square b plus 3a b square. Let's simplify it here. Okay, we'll have to keep going to and fro. So ठीक है, जहां पे भी x square है, sorry, I square है, we'll replace it by -1. Okay, this is what we're going to do. So this and this will replace by -1. I cube will be replaced by minus I. I cube will be replaced by minus I. Okay, so let's simplify. So first term is 2 times x square plus 2xiy minus y square. You can check that the I square is replaced, everything else remains the same. Minus I times x cube as it is. There is a plus I cube, so that will be replaced by minus I y cube as it is. Then you have 3x square iy as it is. And this will become negative 3y square x. Okay. The I square gets replaced by negative 1. Okay. Let's open the brackets. 2x square 4ixy 2y square. अभी I अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो minus ix cube minus minus plus I square y cube. Again I gets multiplied, negative हो जाएगा I square 3x square y positive 3i y square x. ऑब्जर्व दो जगह पे वापस I square आया है. अगेन उसको -1 से रिप्लेस करेंगे. So 2x square plus 4ixy 2y square ix cube minus y cube, ये I square को रिप्लेस किया. ओके, plus 3x square y plus 3iy square x. Now next thing what you will do is put real and imaginary part separate. मतलब I वाले and non I वाले term. Non I terms ये रहे 1 2 3 और 4. ये जो नॉन आई टर्म्स है ये आपका u है. ओके, यू कैन क्रॉस चेक. क्वेश्चन में जो u दिया है उसमें 2x स्क्वायर हमको फर्स्ट टर्म आया, यहाँ पे सेकेंड है. negative 2y square you can check. Okay, negative y cube and 3x square y, ये u मिला आपको as it is. Plus I times I वाले terms 4xy minus x cube. Okay, and there are 3 terms, 1 2 and 3. So plus 3xy square. Now whatever is the imaginary part, ये जो बचा है ना imaginary part, this is now your u plus I. So this implies your v, which is the imaginary part, is 4xy minus x cube plus 3xy square. Therefore the orthogonal trajectory, question orthogonal trajectory पे v नहीं है. Okay, so orthogonal trajectory is 4xy minus x cube plus 3xy square equal to some d. आप क्वेश्चन देखो, इक्वल टू c लिया था सम कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी और कांस्टेंट ले सकते थे, c1 c2. I've written it as equal to some d. Okay, so that's how you find the orthogonal trajectory. I hope the different category of questions are clear, and you need to practice 1 or 2 more questions of each category to get it thoroughly
inbuilt. These were all the different categories of questions asked in your previous year questions. There are few more questions, but then they are repetitive. मतलब यहाँ पे PQR ढूंढना है, हमको आता है ये करना. ओके, फर्स्ट कैटेगरी में हमने किया है. PYQ पार्ट 1 में मैंने किया है ये. यहाँ पे आपको U+V वाला क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया है. ओके, सो आई होप द टेक्निक्स आर क्लियर विद एवरीवन. PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2019 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस थे, आई हैव सॉल्व्ड इट. ओके, and this should be helpful for you guys. All the very best for your exams.